Hello everyone, this is Sumit from Dear Nursing, and in this video we are going to solve some important questions related to our MSN digestive system for various upcoming government exams in nursing. At the end of this video, don't forget to evaluate yourself and do comment your marks out of 20 in the comment section below. So let's start. Question number 1. Which of the following signs indicate hepatic encephalopathy? Option 1 Homan sign, Option 2 Trousius sign, Option 3 chopstick sign, Option 4 Asterixis. So the right answer is Option 4 Asterixis, जो कि एक न्यूरोलॉजिकल साइन है ऑफ हेपेटिक एंसेफेलोपैथी इन विच देयर इज रैपिड एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन ऑफ हैंड्स प्रेजेंट, and it is assessed by telling the patient to extend his arms straight. Homan sign is seen in DVT. Trousius sign and chopstick sign are the signs of hypocalcemia. Question number 2. Which stool is expected in a patient with ulcerative colitis? Option 1 clay colored stool, Option 2 bloody and mucus, Option 3 well formed, Option 4 ribbon like stool. So the right answer is Option 2 bloody and mucus. Stool is seen in ulcerative colitis. Clay colored stool हमें hepatic disorders में देखने को मिलता है. Well formed stools are normal stools and ribbon like stool is seen in Hirschsprung's disease. Question number 3. Mrs. Manju has just had ileostomy surgery. During the first 24 hours post-op, how much drainage is expected from ileostomy? Option 1 200 ml, Option 2 500 ml, Option 3 1500 ml, Option 4 3000 ml. So the right answer is Option 3 1500 ml. Ileostomy के बाद within first 24 hours 1500 to 2000 ml of drainage is normal. Question number 4. A patient with a history of alcohol abuse and has acute pancreatitis. Which lab value is most likely to be elevated? Option 1 sodium, Option 2 potassium, Option 3 glucose, Option 4 calcium. So the right answer is Option 3 glucose, because due to the damage to pancreas there will be destruction of beta cells, और अगर बीटा सेल्स डैमेज हो जाएंगे तो नो रिलीज ऑफ इंसुलिन या लेस रिलीज, और इंसुलिन ही रिलीज नहीं होगा तो हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल विल बी एलिवेटेड एंड कैन लीड टू डायबिटीज मेलाइटस. क्वेश्चन नंबर 5. Lovely has a GI tract that is functioning but has the inability to swallow foods. Which is the preferred method of feeding for the patient? Option 1 TPN, Option 2 PPN, Option 3 NG feeding, Option 4 oral liquid feeding. So the right answer is Option 3 NG feeding. Explanation: because इस patient का GI tract is functioning but have inability to swallow the food, तो हम ऐसा कुछ method देखेंगे जिसमें we can bypass the mouth, so we will go for NG feeding. TPN that is total parenteral nutrition and PPN that is peripheral nutrition हम जब देते हैं when GI tract is not functioning, and oral liquid feeding हम नहीं दे सकते because there is inability to swallow. Question number 6. Which of the following diagnostic tests should be performed annually over the age of 50 to screen for colon cancer? Option 1 abdominal CT scan, Option 2 abdominal X-ray, Option 3 colonoscopy, Option 4 fecal occult blood test. So the right answer is Option 4 fecal occult blood test. Explanation: बिकॉज जो कोलॉन कैंसर का जो ट्यूमर होता है उसका जो सरफेस की ब्लड वेसल्स होती हैं वो बहुत फ्रेजाइल होती हैं एंड दे ब्लीड वेरी ऑफन, और वही ब्लड वी कैन चेक इन फीकल ऑकल्ट ब्लड टेस्ट. एब्डोमिनल सिटी स्कैन एंड एक्सरे हमारे हेल्प करते हैं टू चेक दैट ट्यूमर साइज एंड मेटास्टेसिस, एंड कोलोनोस्कोपी हेल्प करता है हमें टू लोकेट द ट्यूमर. क्वेश्चन नंबर 7. Which medication is anticipated for a patient with achalasia? Option 1 verapamil, Option 2 isosorbide dinitrate,
Option 3, captopril. Option 4, furosemide. So the right answer is option 2, isosorbide dinitrate. Explanation: achalasia is incomplete relaxation of lower esophageal sphincter. So इस केस में we give isosorbide dinitrate और nitrates to relax the lower esophageal sphincter completely, ताकि हमारा फूड esophagus से stomach में easily pass हो सके, and we give this nitrates orally or sublingually to the patient. Question number 8. Which symptom, if resolved, indicate the effectiveness of paracentesis on a patient with liver cirrhosis? Option 1, jaundice. Option 2, dyspnea. Option 3, anorexia. Option 4, edema. So the right answer is option 2, dyspnea. Explanation: ascites की वजह से there is a pressure on diaphragm. पैरासेंटेसिस में वी रिमूव द एक्सेसिव फ्लूइड इन द पेरिटोनियल कैविटी, जिसकी वजह से हमारा प्रेशर ऑन द डायफ्राम इज ऑल्सो रिड्यूस्ड एंड डिस्निया इज रिलीव्ड. क्वेश्चन नंबर 9. विच डाइटरी इंस्ट्रक्शंस मस्ट बी इंक्लूडेड फॉर द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग डंपिंग सिंड्रोम आफ्टर बिलरॉथ 2 सर्जरी? ऑप्शन 1, डिक्रीज प्रोटीन इंटेक. ऑप्शन 2, decrease fat intake. Option 3, increase carbohydrate intake. Option 4, restrict fluids with meals. So the right answer is option 4, restrict fluids with meals. Explanation: dumping syndrome के बाद हमारा एम होता है टू डिले द गैस्ट्रिक एम्प्टिंग, और फ्लूइड्स को रेस्ट्रिक्ट करके वी आर डिलेइंग गैस्ट्रिक एम्प्टिंग. इन दिस कंडीशन हमें कार्बोहाइड्रेट्स को हमारी डाइट में डिक्रीज करना होता है, फैट को इंक्रीज और प्रोटीन को भी इंक्रीज. क्वेश्चन नंबर 10. बबीता हैज़ कोलेलिथियासिस. यू एक्सपेक्ट हर टू कंप्लेन ऑफ ऑप्शन 1, पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू शोल्डर. ऑप्शन 2, पेन इन राइट लोअर क्वाड्रेंट विद रिबाउंड टेंडरनेस. Option 3, pain in left upper quadrant with shortness of breath. Option 4, pain in left lower quadrant with mild cramping. So the right answer is option 1, pain in right upper quadrant radiating to shoulder. Explanation: क्योंकि हमारा गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड इन राइट अपर क्वाड्रेंट, सो कोलेलिथियासिस की कंडीशन में देयर विल बी पेन इन राइट अपर क्वाड्रेंट रेडिएटिंग टू shoulder, because some nerves intersect at our shoulder arising from gallbladder. Question number 11. Mr. Suresh is discharged after herniorrhaphy. Which discharge instructions should be included in his plan? Option 1, do cuffing to improve breathing pattern. Option 2, eat low fiber diet. Option 3, lose weight for obesity. Option 4, resume heavy lifting in 1 week. And the right answer is option 3, lose weight for obesity. Explanation: herniorrhaphy is a surgical repair of hernia. So इस केस में हम पेशेंट को बोलेंगे टू लूज द वेट फॉर ओबेसिटी, बिकॉज ओबेसिटी जो होता है हमारे एब्डोमिनल मसल्स को वीक करता है और बहुत ज़्यादा प्रेशर पुट करेगा एट आवर सर्जिकल साइट. सो वी विल टेल द पेशेंट टू लूज वेट फॉर ओबेसिटी. कफिंग करने के लिए नहीं बोलेंगे हम पेशेंट को, बिकॉज इट विल पुट प्रेशर ऑन द सर्जिकल साइट. वी विल टेल द पेशेंट टू ईट हाई फाइबर डाइट एंड वी कैन रिज्यूम हैवी लिफ्टिंग आफ्टर 2 weeks of surgery. Question number 12. The correct sequence of abdominal assessment is option 1, inspection, percussion, palpation, auscultation. Option 2, inspection, auscultation, percussion, palpation. Option 3, inspection, palpation, auscultation, percussion. Option 4, inspection, percussion, auscultation, palpation. So the right answer is option 2, inspection, auscultation, percussion, palpation. Explanation: abdominal assessment में हम हमेशा palpation लास्ट में करते हैं
to prevent less stimulation to the patient. Even auscultation is always done before palpation to avoid stimulation, peristaltic movement, and to distorting of any auscultatory sounds. Question number 13. Which of the following condition is related to Whipple's procedure? Option 1, cancer of the stomach. Option 2, cancer of the liver. Option 3, cancer of the pancreas. Option 4, cancer of the esophagus. So the right answer is option 3, cancer of the pancreas. Explanation: Whipple's procedure को हम पैनक्रियाटिको ड्यूडेनेक्टोमी भी बोलते हैं और इट इज़ यूजुअली डन टू रिमूव द कैंसर ऑफ पैनक्रियास, जिसमें हेड ऑफ द पैनक्रियास, फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन और ड्यूडेनम, गॉल ब्लैडर एंड द बाइल डक्ट इज रिमूव्ड. Question number 14. Which is the most common type of liver cirrhosis? Option 1, Lennox cirrhosis. Option 2, biliary cirrhosis. Option 3, post-necrotic cirrhosis. Option 4, cardiac cirrhosis. So the right answer is option 1, Lennox cirrhosis, also known as alcoholic cirrhosis, is the most common type of liver cirrhosis. Question number 15. Murphy sign is elicited in which of the following condition? Option 1, appendicitis. Option 2, cholecystitis. Option 3, pancreatitis. Option 4, esophageal varices. So the right answer is option 2, cholecystitis. Explanation: मर्फी साइन हमें cholecystitis में देखने को मिलता है, जिसमें we palpate the right subcostal area of the patient and at the same time हम patient को बोलते हैं to take inspiration. अगर there will be cholecystitis then the patient will feel pain. Question number 16. Which action nurse should not include when advised to terminate TPN? Option 1, monitor temperature every 4 hourly. Option 2, administer 10% glucose to maintain blood glucose level. Option 3, terminate abruptly. Option 4, never terminate abruptly. So the right answer is option 3, terminate abruptly. Explanation: TPN और टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन को हम कभी भी सडनली या अब्रप्टली स्टॉप नहीं कर सकते हैं. वी हैव टू स्टॉप इट स्लोली. ऑप्शन 1, मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली, बिकॉज TPN को हम सेंट्रल लाइन के थ्रू देते हैं एंड सेंट्रल लाइन अगर इंसर्टेड है सो देयर कैन बी रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. सो वी हैव टू मॉनिटर टेम्परेचर एवरी 4 आवर्ली. TPN स्टॉप करने के बाद देयर कैन बी रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, सो वी हैव टू एडमिनिस्टर 10% ग्लूकोज टू मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल. क्वेश्चन नंबर 17. Rishila is planned for paniculectomy surgery. The nurse should understand that this procedure involves option 1, reduce the size of the stomach. Option 2, remove fat deposits. Option 3, placement of adjustable band around stomach. Option 4, remove excess abdominal skin folds. So the right answer is option 4, remove excess abdominal skin folds. Question number 18. 1 gram of fat gives how much calories? Option 1, 3 calories. Option 2, 6 calories. Option 3, 9 calories. Option 4, 15 calories. So the right answer is option 3, 9 calories. So 1 gram of fat gives 9 calories. Question number 19. Barrett esophagus is an example of option 1, metaplasia. Option 2, dysplasia. Option 3, neoplasia. Option 4, carcinoma in situ. So the right answer is option 1, metaplasia. Explanation: Barrett esophagus एक metaplasic condition है in which there is the changes in the mucosal cell lining of the lower portion of esophagus, जिसमें normal stratified squamous epithelium changes to simple columnar epithelium of the esophagus. Question number 20. Vijay have been diagnosed with cholelithiasis recently. The nurse explains him that 80% of gallstones are composed of option 1, calcium. Option 2, hardened cholesterol. Option 3, bile. Option 4, bilirubin. So the right answer is option 2, hardened
कोलेस्ट्रॉल। एक्सप्लेनेशन, 80% ऑफ गॉलस्टोन्स जो होते हैं इन केस ऑफ कोलेलिथियासिस is composed of hardened cholesterol material. So this is the end of this video. Don't forget to comment your marks below. Hope you all liked.